Okay, so let's go through this again. You will take a proper history, okay, and the history will give you history of trauma, steroid, alcohol use, some medical conditions, and then they have deformity. And when you examine them, they will have an antalgic gait, their joints will be stiff, and they may have muscle wasting. Okay, so that doesn't mean it's AVN, but it'll give you a suspicion that this might be AVN. Okay, and then you X-ray them. Okay, so the key thing is that most X-rays are normal up to 3 months. Okay, and that's why the various classification. Once you look at the X-rays and things are starting to happen, you will have a sclerosis, some flattening, some radiolucence lines, such as the crescent sign, and then collapse and then OA. Okay, so it goes through various stages. And this is the sequential changes that will happen in an X-ray. The first thing you will see is a crescent sign. Okay, the crescent sign is because, do you know why you have a crescent sign? Subchondral fracture, sir. Yes, sir. Yes, so the blood supply is not good. Because the blood supply is not good, there is death of cells. Because of the cells dying, it will not be able to weight bear, and therefore it will collapse under the weight of the body. Like, okay. So then the next thing is osteopenia, and the osteopenia you see is because macrophages are actually coming in and clearing everything up. Okay. Then you have granulation tissue formation, which is what sclerosis would look like, sclerosis. And then there are major cleaning up and tidying up, and that will become as a cystic change. Okay. Occasionally, the vertical weight-bearing dome will lose its sphericity, or it won't be round. And then you will have collapse of the head and then secondary osteoarthritis. So this is the stages. This is the process that it goes through. Remember, it will collapse first because of the weight. Then there will be macrophages coming in causing osteopenia, granulation tissue formation, cleaning up and tidying up causing cystic changes. Then it won't be round anymore. It will start collapsing and you will arthritis. Okay. So I think I have some history here, X-rays here. These are not all my X-rays. Some of them are, but you can see a crescent sign because it is too much of weight and it can't hold on to it. Once the crescent signs come in, you will see these areas of osteopenia. Okay, that's the macrophages coming in and cleaning up the dead tissue. Okay, then you have an area. If you can clearly, you can see this area of sclerosis. That's the granulation tissue being formed. So after this, it becomes this. That's because the granulation tissue is forming into it, okay? Then all the cleaning up is taking place. You can have cystic changes. The round bit is now not round anymore, and then it starts collapsing, okay? These are the various stages. After this will be arthritis. So if you see an X-ray with a crescent sign or cyst or lucencies or flattening of the head, then these are features of AVN, okay? So Okay, sir. in CT scan, there's a thing called the asterisk sign. Does anybody know what that is? No, sir. Okay. So when you do a CT scan, a normal CT will show very good dense bone. This is called the asterisk sign. You know, when you have it in your telephone, you have an asterisk. Do you have an asterisk in your telephone? Okay. Do you know what an asterisk Can't is? understand that. Okay, I'll show you too. Just give me a minute. Why can't I see my telephone? इसको लगा अच्छा आ रहा है यार. So if you look at your telephone, you should have asterisk signs. Do you know when you text? Let's see, it'll be on WhatsApp. Let's say. Okay, so if you open your telephone, it's like a star-shaped sign. That's called asterisk. Can you understand now? Sir, what is the spelling of that? ASTREX. इसमें देखिए स्टार का साइन नजर आ रहा है आपको. जो टेलीफोन होता है ना, उसमें हैशटैग के साथ स्टार भी नजर आता है. Can you see it? Hashtag के साथ स्टार के साथ. या तो जो स्टार होता है ना हैशटैग के साथ, उसको एस्टेरिक्स कहते हैं. Spelling, sir? ये जो है ना, if you can see this, इसको इमेजिन करें कि इसको स्टार बना, इसको ये लगा हुआ है इस तरह करके ना. Yes, sir. जो हैशटैग के साथ साइन नहीं होता है, this is called an asterisk. So normally, sorry? Can I ask a question? Yeah, okay.
Do we need to get a routine CT scan for AVN? Because what routine practices we get MR for AVN when we are suspecting it? So what I'm teaching you today is, if you were doing MRI scan, what would you see? If you're doing a plain film X-ray, what would you see? If you do a CT scan, what would you see? So बहुत दफा ऐसा होता है कि आप CT scan कराते हैं because indication is different. तो उसमें normal CT scan जो होगा ना, उसमें आपको ये asterisk नजर आएगा. ये जो है ना asterisk normal CT scan नजर आता है, इसका मतलब है AVN नहीं है इसको. Good bone. AVN नहीं है. AVN नहीं है इसको, अगर ये asterisk नजर आएगा. लेकिन अगर आप उसका CT scan कराएं और उसमें asterisk नजर नहीं आता है और collapse है, तो that is AVN. Okay. जो गुड बोन क्वालिटी होगी ना, उसमें इस तरफ को एक ऐसे क्रिस क्रॉस किस्म का स्टार नजर आएगा. दैट मींस द बोन क्वालिटी इज गुड. देयर इज नो एवीएन. इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई जा रही है उसको. लेकिन अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी ना, तो बीच में एस्टेरिस्क नजर नहीं आएगा. इज दैट अंडरस्टूड सर? बट एक साइड पे तो एस्टेरिस्क नजर आ रहा है सर. किस साइड पे नजर आ रहा है? ये जो सर एरो लगा हुआ है बॉटम पे. यस सर. नहीं, ये तो उसको दिखा रहा है कि एस्टेरिस्क खत्म हो गया. वो बिल्कुल व्हाइट लाइंस नजर आती है. देखो ना, इसमें कितना फर्क है. इट इज गॉट ऑल व्हाइट लाइंस. ओके, ठीक है ना. asterisk is a normal bone. If you don't see an asterisk, then it's an abnormal bone. And then there is collapse. You can see collapse in here also. Okay. और CT स्कैन में अगर asterisk नजर भी आता है, तो बोन का जो collapse होता है ना, वो नहीं normal है, तो that means it's an AVN. So if you do a plain film, we showed you that you will have crescent sign, you will have sclerosis, you have lucencies, you have collapse. If at the same time you do a CT scan, then this is what the CT scan will show. Okay, there will be no asterisk and there will be collapses. Okay, अगर आप bone scan कराएं इस patient का, तो क्या नजर आएगा उसमें? बड़ी classic feature होती है bone scan की. हाई अपटेक सर. उसका एक नाम होता है, डोनट साइन कहलाता है वो. कोल्ड को डोनट देखा है आपने? डोनट का बाहर जो होता है ना, वो बंद होता है, बीच में उसके सुराख होता है, स्पेस होता है. यस एग्जैक्टली. सो इसमें जो है ना, सीटी स्कैन में डोनट साइन नजर आता है. उसके बोन स्कैन में इसमें बोन बीच में होगी, बीच में गैप होगा. यस सर. बोन ब्लैक अपटेक होगा, बीच में गैप होगा. दिस इज वेरी क्लासिक ऑफ एवीएन. क्यों होता है इसमें ये डोनट साइन? सर दिस विल बी स्टेज फॉर स्टेज 1 सर. यस, अर्ली डायग्नोसिस. उसमें ये होता है कि जो ये ब्लड है ना, वो इंक्रीज अपटेक दिखा रहा है, लेकिन जहाँ पे एवीएन है, बोन डेड हो गए ना, वहां पे कोई ब्लड की अपटेक नहीं होगी. इसको डोनट साइन कहते हैं. इर्द गिर्द उसके हाइपरीमिया है, खत्म, ब्लड सप्लाई नहीं है. सर आपकी आवाज में ब्रेक आ रहा है. आई डोंट नो व्हाई. कैन यू हियर मी बेटर? नो, इट्स getting breakage in between. Yeah, it might be your computer or your internet. Mine is okay. I don't know. We'll see. If it doesn't, I'll change my mic then. Yeah. तो जो डोनट साइन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि हाइपरीमिया है, बोन स्कैन में इंक्रीज अपटेक है, बिकॉज द ब्लड इज ट्राइंग टू हील, बिकॉज यू वांट टू हैव ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. बट बीच में बोन जो है वो डेड है, तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो बाहर से जो है ना, उसमें इंक्रीज अपटेक होता है, बीच में गैप होता है. इसको डोनट साइन कहते हैं. दिस इज पैथोग्नोमिक फॉर एवीएन. ठीक है? नहीं ठीक है? नहीं ठीक है. Everybody happy? Yes sir. We'll come back again. Yes, sir. And everything. We'll come back. No worries. We'll come back. So उसके बाद MRI स्कैन जो है ना, वो 90% सेंसिटिव है. सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? और स्पेसिफिक का क्या मतलब? साइंस की डेफिनेशन होगी. मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइंस पॉजिटिव की तरफ सर. पॉजिटिव. तो सेंसिटिव और स्पेसिफिक याद रखिएगा. ठीक है? सेंसिटिव में एन होता है ना, तो सेंसिटिव का मतलब है कि फॉल्स नेगेटिव्स कम होते हैं उसमें. और जो स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक का मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव उसमें कम होते हैं. उसमें पी होता है तो फॉल्स पॉजिटिव कम होते हैं. ठीक है? तो सेंसिटिव का मतलब ये है कि टेस्ट जो है ना, आपको गलत नहीं दिखाएगा. और फॉल्स पॉजिटिव जो स्पेसिफिक, उसमें होता है कि खास उसी के लिए जो है ना, ये टेस्ट बना हुआ है उसके लिए. दिस इज अ सेंसिटिव बट नॉट अ स्पेसिफिक टेस्ट. ओके?
और इसमें क्या होता है, उसके अंदर जो होता है कि जो जो डबल लाइन साइन नजर आता है T2 में, तो ये एवियन आप उसका MRI स्कैन कराओगे ना तो T1 में आपको नजर आएगा कि कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, कैन यू सी इट? Yes, that's the subchondral fracture. T2 में पानी होता है ना, तो जहाँ कोलैप्स होगा उसके नीचे एडिमा होता है ना, तो डबल इसको साइन कहते हैं। ये नीचे जो नजर आ रहा है उसके अंदर, ये आपका ह्यूमरल फेमरल हेड है, ये पूरा कोलैप्स हो रहा है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, उसके नीचे एडिमा शुरू हो गया ना, तो उसका एडिमा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इसको डबल लाइन साइन कहते हैं। T2 में डबल लाइन साइन होता है, T1 में कोलैप्स नजर आ रहा होता है, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Okay, shall we go back again to X-ray and CT and इसको आना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में इसी में आदमी जो है फंसता है। जब इसका एक्सरे कराओगे ना, सबसे पहला काम ये होगा, मरीज सिम्टम के साथ आएगा उसका पहले एक्सरे कराओगे, ठीक है? या तो एक्सरे में कुछ नजर नहीं आएगा, नॉर्मल मिलेगा, हाँ, अगर कुछ भी नजर नहीं आएगा तो ठीक है, फिर आप उसको वेरियस अदर इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन अगर उसके एक्सरे में कुछ नजर आएगा तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोलैप्स नजर आएंगी। सबसे पहले चीज उसमें एक्सरे में अगर अर्लीस्ट जो है ना वो क्रेसेंट साइन नजर आएगा, फिर उसके बाद उसमें जहाँ क्रेसेंट साइन होगा उसके नीचे ऑस्टियोपेनिया हो जाएगा, फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से स्क्लेरोसिस हो जाएगा, फिर जब माइक्रोफेजेस जो है अपना काम करेंगे तो सिस्टिक चेंजेस आएगी, फिर वेट की वजह से उसके जो राउंडनेस खत्म हो जाएगी, फिर कोलैप्स हो जाएगा, फिर आर्थराइटिस शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू विल सी इन एक्सरे सीक्वेंशियली। So depending on what you see, you can say at what level your AVN is. Okay. So जो हमने कहा था ये crescent sign U नजर आएगा, osteopenia जो है ना वो इसमें U नजर आएगा, ये पूरा osteopenia है सारा का सारा। Can you see that? Yeah. The bone does not look the same color as everything else, although it is spherical. फिर granulation tissue जब आएगी तो उसमें increase opacity टाइप की चीज नजर आएगी, sclerosis जिसको कहते हैं। उसके बाद सिस्ट नजर आते हैं इसके अंदर, फिर राउंडनेस खत्म होती है, फिर कोलैप्स शुरू हो जाता है। दिस इज ऑल कोलैप्स, यू कैन सी ऑल दिस इज कोलैप्स नाउ। ओके, सो दिस इज क्लासिकल एक्सरे फीचर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस बिट नाउ? यस सर। जब आपको एक्सरे दिखाएंगे ना तो आपसे उसे स्टेज करेंगे, वी विल गो टू क्लासिफिकेशन। सो एक्सरे विल गिव यू स्टेजिंग, ओके, सो इट विल टेल यू व्हाट लेवल योर डिजीज इज, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। पहले क्रेसेंट आता है, फिर उसके बाद साफ करते हैं, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, फिर स्क्लेरोसिस हो जाता है, फिर सिस्ट बनते हैं, फिर राउंडनेस खत्म हो जाती है, फिर कोलैप्स हो जाता है, ठीक है? सो एक्सरे इज क्लियर नाउ, या? उसके बाद अगर उसका सीटी स्कैन कराएंगे ना तो उसमें बोन कोलैप्स नजर आती है, लेकिन हेल्थी बोन की साइन जो होती है ना नॉर्मल सीटी स्कैन में, उसको एस्टेरिक साइन कहते हैं। अगर उसको क्या कहते हैं, एवियन शुरू हो गया है ना, तो ये सबसे पहले इसकी खत्म होती है, जो बोन की क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो इफ यू सी इट, यू कैन सी कोलैप्स, but you don't see the asterisks as good as you should. इसमें छोटा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ये नजर आ रहा है। Can you see that? Yeah. Yes, sir. This is a CT scan sign. Okay. And then if you do a bone scan, you will see a donut. So इसका मतलब है कि ये हाइपरईमिया हुआ है, बीच में जहाँ से ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है ना, वो वहां पे जो है वो व्हाइट होता है, उसमें अपटेक नहीं होता। Sir, can we call this donut sign as a cold spot, sir? No, it's not a cold spot. Cold spot सारा का सारा होता है। तो ये पूरा का पूरा अगर व्हाइट होता ना तो ये कोल्ड स्पॉट कहलाते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया है कि इतना सारा जो है ना अपटेक इंक्रीज हो रहा है कि बीच में नहीं है। ओके सर। तो इसको डोनट कहते हैं, बाहर से सॉफ्ट होता है, बीच में उसमें साफ होता है। किसी शरीफ ऑर्थोपेडिक शख्स ने बताया, क्योंकि ज्यादा उसने सोचा नहीं, उसने डोनट खा रहा होगा, उसको नजर आया होगा, उसने कहा डोनट साइन है। ठीक है, तो दिस इज द डोनट साइन इन अ बोन स्कैन। अगेन बोन स्कैन अर्ली इज अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ गिविंग यू अ डायग्नोसिस, ठीक है? उसके बाद जो MRI स्कैन इज द मोस्ट सेंसिटिव, और MRI स्कैन में जो है ना T2 में डबल इमेजेस नजर आती हैं और T1 में कोलैप्स नजर आता है। ये T1 है, उसमें कोलैप्स नजर आ रहा है। उसके बाद जब उसका एडिमा पानी देखने के लिए T2 की इमेज चाहिए, तो आपको जहां पे कोलैप्स है उसके नीचे एडिमा नजर आ रहा है, जिसको डबल लाइन साइन कहते हैं, ठीक है? अब इसके साथ मिलती जुलती कंडीशन होती है, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द हिप। इसका नाम सुना है? नो सर। प्रेगनेंसी में होता है औरतों को, उसको बोन मैरो एडिमा सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो है ना एडिमा हो जाता है बोन मैरो का, जिसकी वजह से ऑस्टियोपेनिया नजर आता है उसमें एक्सरे में, और उसको MRI स्कैन भी करो ना तो उसका इंक्रीज्ड अपटेक नजर आता है उसमें। इफ यू कैन सी दिस एडिमा हो रहा है, इसमें कोलैप्स नहीं होता। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस AVN एंड दिस। इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं जाती है, इसकी ट्रीटमेंट भी डिकम्प्रेशन है, लेकिन इसमें उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कोलैप्स नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर बढ़ जाता है अंदर से। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द हिप, कॉमन इन प्रेगनेंसी फीमेल्स। यस।
ओके उसके बाद जो है ना सर कंफर्म लिमिटिंग है सर, ये ट्रांजिएंट जो है ये खुद ही ठीक हो जाता है या इसमें डिकम्प्रेशन करनी पड़ेगी? इसकी डिकम्प्रेशन करनी होगी, आपका एडिमा का प्रेशर बढ़ जाता है इसके अंदर, उसका बोन मैरो का। It can lead to AVN. It No. can lead to AVN long term, yes, but जब इसको डायग्नोसिस होती है ना तो उसकी चेंजेस AVN में उसमें MRI स्कैन में नजर आती है, लेकिन कोलैप्स नहीं होता है इसके अंदर। अगर इतना आपको एडिमा नॉर्मल AVN में नजर आ रहा होगा ना तो उस वक्त उसका हेड नेली डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। इसमें पेन और सिम्टम्स एग्जैक्टली वैसे ही होता है, लेकिन हेड कोलैप्स लेट करता है। और सबसे कंफर्म डायग्नोसिस की ये है कि इसकी हिस्टोलॉजी करें, टिश्यू ले जाए, तो उसमें जो है ना ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज नजर आती है और नेक्रोटिक बोन होती है। ठीक है, हिस्टोलॉजी इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर इट। अब कुछ लोगों ने जो है ना प्रेशर मेजर करना भी शुरू कर दिया है, एंड व्हाट दे डू इज वो फेमरल में जो है DHS के उससे वो कैनुला डालते हैं, फिर उसमें सेलाइन इंजेक्ट करते हैं, फिर प्रेशर मेजर करते हैं। अगर आपका AVN होगा ना तो उसको जब आप सेलाइन डालेंगे ना तो उसका प्रेशर जो है 10 या 15 मिलीमीटर नहीं बढ़ेगा, बल्कि 4 या 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। But this is only for you to know that this can be done. You don't have to remember this. ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो everybody should note at least 2 when you're talking about AVN. One is Ficart and one is the ARCO classification. So Ficart classification everybody knows, yeah? Yes sir. Ficart ने originally 3 डिस्क्राइब की थी, हमने 2 और इसमें ऐड कर दिए हैं, हमने तो नहीं बट लेटली। ठीक है, so what is stage 0? Normal X-ray sir. तो stage 0 क्यों क्लासिफाई करेंगे? फिर इसका मतलब है कि मेरा और आपका भी stage 0 है इस वक्त AVN। Only clinical finding sir, पेन के साथ आएगा मरीज आपका। नहीं, इसमें stage 0 में कोई क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं होती है। Sir, we find only on biopsy while the X-ray and MRI are normal. और तब इसका मतलब यह है कि जो शख्स घूम रहा है और उसको हिप में कोई सिम्टम नहीं है, उसकी आप बायोप्सी करेंगे। ऑटोप्सी पे सर किसी की कॉज पता करनी, वैसे किसी और वजह से किया हो तो उसमें से सर ऑटोप्सी पे ऐसे नहीं होता है। मेडिसिन में होता यह है कि किसी की एक साइड की हिप की प्रॉब्लम है, अच्छा, और आपको पता करना है कि दूसरी साइड की हिप की इसकी प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उसमें अगर सारे सिम्टम्स एक्सरे MRI बोन स्कैन सब कंप्लीटली नॉर्मल हो ना तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं स्टेज 0। यू हैव टू हैव अ प्रॉब्लम ऑन द अदर साइड, और किसी बंदे को आपने लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, या कोई बंदा जो है उसको ट्रॉमा हो चुका है उसके नेक ऑफ उसका फीमर का, लेकिन आप चेक करना चाहते हैं कि इसको AVN तो नहीं शुरू हो गया है, तो उसमें अगर एक्सरे MRI और सिम्टम्स ना हो तो आप उसको स्टेज 0 में डाल सकते हैं अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में। या किसी को पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे वो डिपोजिशन डिजीज है ना, गॉशर्स और नोमन पिक्स और इस तरह की, या किसी को SLE हो या सिकल सेल हो, तो एक साइड को तो उसको AVN शुरू हो गया, आप सोच रहे हैं कि दूसरी साइड को है कि नहीं। अगर आप उसके सब कुछ नॉर्मल है तो आप उसको स्टेज 0 पे डालेंगे, लेकिन यू हैव टू स्टिल कीप एन आई ऑन देम टू मेक श्योर यू डोंट मिस इट आउट। ओके, फिर स्टेज 1 में क्या होता है? सर MRI पे चेंजेस। Sir, X-rays are normal, but there are findings of marrow edema on the MRI. But you also have symptoms. सर Yes. स्टेज 0 की बात करें माइल्ड पे जी, स्टेज 0 में आपने कहा कि क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, तो if a patient is presenting to us with unilateral AVN और दूसरी साइड पे उसको मतलब किस तरह हम कहेंगे कि एक हिप पे उसका PK4 है और दूसरी स्टेज बिल्कुल नॉर्मल है, तो अगर उसको नॉर्मल है तो आप उसको कहें स्टेज 0, उसको कुछ नहीं है ना, स्टेज 0 है उसको। अच्छा, तो ये नॉर्मल साइड का स्टेज 0 है? या स्टेज 0 इज नॉर्मल, लेकिन आपको उसके ऊपर आई रखनी है, उसको देखना है कि उसको फ्यूचर में तो नहीं होता है। दैट्स व्हाई यू हैव कैटेगराइज्ड स्टेज 0। मेरा और आपका तो स्टेज 0 नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन जो शख्स का एक साइड को है, या वो स्टेरॉइड्स पे है, या लॉन्ग टर्म वो जो है अल्कोहल अब्यूज पे है, या उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, या उसको फैट डिपोजिशन ऑर्डर है, या उसको जो है ना कैसेंस डिजीज है, तो इन पेशेंट्स को आप एक साइड की डायग्नोसिस करके दूसरी साइड छोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट लीव हिम अलोन, यू हैव टू मेक श्योर दैट उधर नहीं होता है दूसरी साइड को, तो उसको लॉन्ग टर्म फॉलो अप पे रखते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में उसको कहते हैं स्टेज 0 पे है। और उस एक साइड की स्टेज 0 होगी जो पहली जिसमें अभी PK4 है, बगैर सिम्टम्स के तो यू डोंट नो। सो दूसरी साइड को या 1, 2 या 3 या 4 होगी, दोनों साइड 0 नहीं होगी। हो सकती।
Okay, okay. Is that clear to everybody? यस सर। हाई Yes, sir. रिस्क के लिए सर 0 स्टेज। जीरो का मतलब है नॉर्मल है, लेकिन आपको पता है कि दूसरी साइड को कुछ हो रहा है या इसको प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स हैं, तो आपने उसको जीरो क्लासिफाई किया, लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब ये है कि फ्यूचर में आप इसको फॉलो अप करेंगे ताकि इसको आगे कोई जो है ना इंक्रीज तो नहीं हो जाता, ये 1 2 या 3 में तो नहीं चला जाता, तो दैट्स जीरो। सो दिस इज फिकार्ट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक इसकी रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिकार्ट के साथ मैनेज करती है, ठीक है। दिस वी हैव डिस्कस्ड दिस वेरी क्लियरली ऑन एक्स-रेज, बट 3 से क्रेसेंट साइन शुरू होना शुरू हो जाता है उसको, ठीक है। 2 जो होगा ना वो आपको MRI स्कैन में नजर आएगा, और जो स्टेज 1 होगा ना वो आपको डोनट साइन नजर आएगा उसके बोन स्कैन में। दिस इज ए मार्कस क्लासिफिकेशन बट इज बेस्ड ऑन CT, MRI एंड बोन स्कैन, ठीक है। और स्टेज 6 इसमें डीजेनरेट डिजीज, ये सारी हमने एक्सरे में देखी थी, डिस्कस की थी अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद फिकार्ट क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। फिकार्ट क्लासिफिकेशन की क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग अब उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो कम इस्तेमाल करते हैं? सर उसने स्टेज 2 जो है पेरिकलेप्स को कंबाइन किया है 2-3 स्टेजेस को साथ में। हाँ, जो फिकार्ट क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप डिजीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ है, किधर है और किस जगह पे है। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, इट डज नॉट टेल यू लीजन का साइज कितना है, किस सरफेस पे और कौन सी चीज इन्वॉल्व हुई है। इट जस्ट टेल यू कि एक्सरे में नजर आ रही है, एक्सरे में नजर आ रही है, नहीं आ रही है, कोलैप्स हो गया, कोलैप्स बड़ा हो गया और उसके बाद आर्थराइटिस हो गया है। But when you want to treat it, it does not help you to tell you where the problem is. Did you understand that? Yes, sir. Yes, sir. In the exam, you must tell, if somebody asks you that what classification you use, then you tell them you're aware of 2 classification. Ficart classification is based on X-ray findings, but in my view, or the Ficart has a limitation where it doesn't tell you what the lesion is and how big it is and where it is. Yeah. Therefore, I prefer to use the ARCO staging. Okay. So, what's an ARCO staging? Sir, ARCO stands for American Rheumatology Committee. Satish, Satish? Yes, sir. ARCO divides What does stages ARCO stand for? of avian. Or I forgot the full form, sir. Okay. American Rheumatology Committee. American Research Council? Yes, it's an American research something organization anyway, but it's a university that has sat down and spoke to a lot of people and come with a classification. It's called the ARCO staging. Okay, it's the American Research Rheumatology. Okay, so that's the classification you should know. Yeah. Okay, इसमें भी उन्होंने 0 डाला है कि एसिम्प्टोमेटिक है, नॉर्मल है और कोई डायग्नोसिस नहीं है उसकी, लेकिन 0 का मतलब ये है कि दूसरी साइड को प्रॉब्लम है, इस साइड को हमने 0 रखा हुआ है। ठीक। Yes. इसके बाद जो है ना वो बेसिकली अगर एक्सरे क्लासिफिकेशन को सब उसमें डाल देते हैं 3, 4 और 5 के बाद जो है ना एक्सरे चेंजेस नजर आती हैं जिसमें कोलैप्स शुरू हो जाता है, कितना आर्टिकुलर सर्फेस चला जाता है और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर, फिर उसमें आर्थराइटिस शुरू हो जाता है और फिर डिस्ट्रक्टिव जॉइंट हो जाता है। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन। Let's look at what ARCO is. Let's put it on the internet. Let's go look up. Can you look up quicker than me then, yeah? यार अंदर भी है हॉस्टल, अंदर हॉस्टल में एटॉमिक एनर्जी American का है। Anyway, just give me a minute. चलो इसको बाद में देख लेंगे, जब टीचिंग खत्म हो जाए इसको बाद देख लेंगे। Shabad is looking up for it. Okay, good. So मैनेजमेंट ऑफ एवियन जो है ना, एग्जाम में अगर कोई पूछे ना तो 2 जवाब देने हैं उसको। मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव, आई नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव। ठीक है, हर मरीज को पहले नॉन ऑपरेटिव का मैनेजमेंट देना है, वरना अगर आपने नहीं बताया तो एग्जामिनर ये कहेगा कि इसको नहीं आता है। ठीक है, तो द मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है कि जॉइंट को आपने ऑफलोड कर दिया बाय क्रचेस इस्तेमाल करके, या उसको आपने रेस्ट दे दिया
या उसको आपने जो है एनाल्जेसिया पे स्टार्ट कर दिया, और अगर जो है ना बिस्फॉस्फोनेट्स में नहीं है तो उसको आप बिस्फॉस्फोनेट देते हैं कोलैप्स रोकने के लिए। और समटाइम्स जो है ना जो स्टेरॉइड्स की वजह से लिपिड डेपोजिशन हो जाती है ना, उसको आप स्टैटिन्स देते हैं लिपिड कम करने के लिए। So non-operative management, you must remember, is offloading by giving them crutches, immobilizing them, analgesia, bisphosphonate, and statins. This is the non-operative management. Okay, so principle ke preserve rather than replace, or early intervention is better than late intervention. Okay, so this is simple to understand. Okay, so मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ना 1 और 2 में आप उसको बिस्फॉस्फोनेट दे सकते हैं, या अनलोडिंग ऑस्टियोटमीज कर सकते हैं, या मेडुलरी डिकम्प्रेशन कर सकते हैं। In early stages of 1 and 2, we're talking about now the ARCO classification. Yeah, in early stages in 1 and 2, you can give the medicine, you can do an unloading osteotomies to remove the articulating surface which is collapsing out of where it should be to redistribute the weight, or you do a decompression. Okay, जो लेट स्टेजेस होती हैं 3 and 4, उसमें आप रीअलाइनमेंट ऑस्टियोटमी कर सकते हैं, नॉट अनलोडिंग बट रीअलाइनमेंट, डिकम्प्रेशन कर सकते हैं और आर्थोडीसिस कर सकते हैं। और लेट स्टेज में फिर जो है ना आर्थोप्लास्टीज एंड आर्थोडीसिस। सो रिमेंबर दिस स्लाइड। या अर्ली स्टेजेस में या तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या उनका डिकम्प्रेशन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज में आर्थोडीसिस एंड रीअलाइनमेंट ऑस्टियोटमीज करते हैं, और लेट स्टेजेस में आर्थोप्लास्टी आर्थोडीसिस करते हैं। ठीक है Sir, Shabaz has seen on the internet that its ARCO stands for Association Research Circulation Osseous. नहीं इतना चलो ठीक है, जो भी है वो that is better, but the two classification you need to remember is ARCO and PICAT, but you must know what ARCO stands for, क्योंकि examiner तुमसे पूछेगा ARCO क्या होता है, तो just make sure that you read what ARCO is. Yeah. Okay. So management principles, yeah, early stages we have decided. Yeah, this, remember this slide. So we in 1 and 2 it's an early stage, 3 and 4 is intermediate, and 5 and 6 is a late stage. Okay, उसमें medicine दे सकते हैं such as bisphosphonate, या जो है वो statins, non weight bearing कर सकते हैं, unloading osteotomies कर सकते हैं, medullary decompression कर सकते हैं। Later on, Sir, what is the difference between unloading and realignment osteotomy? I will show you. Okay. Okay, so तो लेट स्टेजेस में जो है ना फिर या तो आप उसको जो है रिप्लेस करते हैं, या उसको जो है ना मैनेजमेंट उसकी पेन रिलीफ से करें। तो मेडिकल इंडिकेशन मैनेजमेंट की क्या है? अगर एसिम्प्टोमेटिक लीजन है, स्मॉल लीजन, एक्सरे फाइंडिंग्स है सिर्फ, या इट इज गॉन सो एडवांस्ड दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बट जस्ट गिव द मेडिकल मैनेजमेंट, और व्हेन द पेशेंट हैज सेड दैट आई डोंट वांट सर्जरी और इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू हैव सर्जरी। Okay, or if you have decided you want to give them a joint replacement to buy yourself time, you give them medical management. Are we clear on medical management? अगर lesion asymptomatic है या इतना एडवांस हो गया है कि उसकी प्रोफिलैक्टिक मेजर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जो है वो मरीज ने खुद कहा है कि मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, या उसने जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या आपने डिसाइड कर लिया है कि you want to give an arthroplasty, so you're buying time until you do an arthroplasty. This is the role of medical management in AVN. Okay. Okay, sir. Okay. So basically, so medical treatment is in every stage. You will start with medical treatment, sir. Yes. Exam में कहना है कि अगर वो कह के नहीं ऑपरेशन बताया, तो फिर उसका जवाब ये देना है कि assuming there is no contraindication to surgery, all medical management has been exhausted. The patient is in a stage where he needs a surgical treatment. My plan of management will be, इस तरह करके बताना, उसको बताना जरूरी है कि शुरू जो मरीज आता है ना आपके पास क्लिनिक में, जो मरीज आता है उसको डायरेक्टली उसको थिएटर में बुक करके उसका ऑपरेशन तो नहीं करते हो ना रियल लाइफ में। yes, sir. ठीक है ना, आपके पास किसी भी स्टेज पे मरीज आता है, एक्सरे डज नॉट मैच सिम्टम्स, आप उसको सबसे पहले उसका पेन रिलीफ करते हैं, उसको फिजियो के पास भेजते हैं, और उसको वेट बेयरिंग उसका स्टेटस जो है ना उसको अब मॉडिफाई करते हैं। फिर इसके बाद उसको क्लिनिक में बुलाते हैं, फिर क्लिनिक में जब बुलाते हैं फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जब तक वापस आ चुकी होती है, उसके ब्लड टेस्ट जो कराए होंगे, सीटी स्कैन कराया होगा, एमआरआई स्कैन जो भी कराया होगा, देन उस वक्त आप उसके साथ डिसाइड करते हो कि भाई आपको जो है ना ये जरूरत है, आपको कोड डिकम्प्रेशन करना है, या आपको हमने ऑस्टियोटमी करनी है, या आपको हमने हिप रिप्लेसमेंट करना है। उस पर भी बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि नहीं भी मैंने ऑपरेशन नहीं कराना है। तो you have to have a role of non-operative management in any kind of surgery. You have to discuss this in the examiner. अगर आपने उसको examiner को नहीं बताया तो मतलब ये कि नहीं आता है।
हमारे यूके में तो बहुत सारा मेडिकल लीगल प्रैक्टिस होती है, पाकिस्तान में तो इतनी नहीं है। अगर आपने लिखा नहीं होता है ना, डॉक्यूमेंट नहीं किया होता, दैट मींस यू नॉट डन इट। तो इसी तरह जो है एग्जाम में, इफ यू डोंट टेल द एग्जामिनर, दैट मींस यू डोंट नो। एग्जामिनर यही करने से नहीं बताया, इसको नहीं आता है। So you have to tell them, okay? So non weight bearing और crutches का रोल क्या है कि जब आपने सर्जरी मेजरमेंट नहीं करनी है, when it's asymptomatic medical condition is so poor you can't operate on the person, or you have already operated on the person and now you want to rest it. So these are all indications for doing a non-weight bearing kind of a procedure, yeah? Or ask them to put crutches on so that they can distribute their weight. Do you know जिस साइड को किस हाथ में जो है केन या क्रच पकड़नी है? Contralateral. Opposite. Why? Opposite. Why do you do that? Do you know? Because during the stance phase of the involved hip, the cane will help to offload that the diseased limb, sir. How? I know that's exactly what he said, but how? Why do you know? What is the science behind it? Center of gravity change हो जाएगा. So the lever arm is longer, right? So the force is going through the hip. When you weight bear on the opposite side, the lever arm is longer. इसी तरह है कि एक पत्थर है, उसको आप जो है ना छोटे से बड़े पत्थर को हिलाएंगे, तो पत्थर को हिलाने के लिए आपने स्टिक या रॉड या मेटल आर्म लंबा कर दिया है, तो उसको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो जो forces going through the hip, if you have a walking stick on the other side, the lever arm becomes bigger, therefore less force is to weight bear. That's why you have to have a walking stick on the opposite side. तो आपका फोर्स कपल और डायग्राम एग्जाम में बनाने को कहते नहीं कहते हैं जो हिप का होता है? Yes sir. हाँ, वो ये जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं ना, उसको जो है कम करने के लिए ये लॉन्ग लीवर आर्म होता है ये। Okay. So सर्जिकल प्रोसीजर्स पर अब आते हैं, जिसपे जो है ना दो टाइप के होते हैं, या तो जॉइंट प्रिजर्व कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस तो बहुत आसान है कि आप उसको जो है हिप रिप्लेसमेंट ऑफर कर दें, या आपको उसको हेमी ऑफर कर दें, या आप उसको हिप रिसर्विसिंग ऑफर कर दें। दैट्स अ जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, सो दैट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपके पेशेंट की आर्थराइटिस हैज गॉन टू स्टेज वेयर ही कैन नॉट कम बैक, बिकॉज़ ही कांट कम बैक, यू हैव टू रिप्लेस इट। ओके, so now the important bit for the exam or for you guys to understand is the joint preserving procedure. So there are core decompressions, which are either vascularized or non-vascularized, and then there are osteotomies. Okay, so सबसे पहले करते हैं core decompression. Core decompression की indication क्या है? ARCO 1 and 2. So early stages. ठीक है, अब जो है 10 मिलीमीटर का जो है ना उसमें कोर बनाते हैं, फिर उसको vascularized या non-vascularized ग्राफ से भरते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो जिससे मेडली कैविटी जो है वो डिकम्प्रेस हो जाती है, एंड उसके बाद जो ग्राफ्ट होता है ना वो उसको स्टेबिलिटी देता है फॉर फ्यूचर वेट बेयरिंग इन योर फीमेल। सो सबसे पहले किसने कोर डिकम्प्रेशन की थी एवियन में? Sir, don't know. सबसे पहली क्लासिफिकेशन एवियन में कौन सी आई थी? Fichet. फिर किसने की होगी? Fichet. Exactly, Fichet did the first core decompression, yeah? तो उसने डिस्क्राइब किया था कि जो DHS का जो वो होता है ना स्क्रू, जो वो 5 मिलीमीटर का होता है, उससे आप पैसेज खोल के बड़ा होल बना के उसको डिकम्प्रेस करके फिर उसको बोन ग्राफ्ट या वेस्कुलाइज नॉन वेस्कुलाइज करके उसको स्टड बनाते हैं। अब जो है लेटेस्ट एविडेंस ये है कि आपको 4-5 मिलीमीटर का होल नहीं बनाना, बल्कि यू कैन हैव मल्टीपल होल्स विद स्मॉल ड्रिल्स, और यू कैन नाउ हैव फ्लेक्सिबल ड्रिल्स, वो अंदर जाके टर्न भी हो जाती हैं। So you don't have to have a big hole. You can have a small holes, and you can decompress it by taking the venous hypertension out of it, taking the dead bone out of it, and then giving a structure by putting some bone graft. The bone graft can be a strut, or the bone graft can be graft from your ileum or tuberosity, or the bone graft can also be an artificial bone graft with a demineralized bone protein आता है, DMP जिसको कहते हैं, वो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, let's go through the process. The first stage है decompress करना, ठीक है। अब आप डिकम्प्रेस करके इसको छोड़ दें, अब डिकम्प्रेस के छोड़ने के साथ साथ उसको आप पीआरपी भी डाल सकते हैं। तो लेटेस्ट तरीका ये है कि जो कुछ करें साथ में पीआरपी भी डाल दें। दिस इज फॉर देयर इज एविडेंस नाउ टू सपोर्ट के डिकम्प्रेस किया और पीआरपी डाल दिया, पीआरपी ने जाके उसमें बोन बना देना अच्छा सा। ठीक है, सेकंड स्टेज में ये होता है कि एक मेथड ये है कि डिकम्प्रेस किया और उसमें फ्री आपने फिबुलर ग्राफ्ट डाल दिया है फॉर weight bearing, but at the same time you can also put PRP with it.
Okay, उसके बाद नेक्स्ट डे जो मैं बता रहा था ना, अब मल्टीपल ड्रिल्स करते हैं, बड़ा ड्रिल सो नहीं करते हैं कि उससे कोलैप्स का वो खतरा होता है। तो इस कंडीशन करने से यू डोंट हैव टू पुट स्ट्रट्स इन इट, बट यू कैन पुट PRP इनटू इट। किस लेवल तक जाना है जब आप ड्रिलिंग करते हैं? सर ये सबकॉन्ड्रल बोन तक 4 to 5 millimeters from the articular surface, yeah? Yes. It is done under X-ray control, so you see it has to have... Sorry? Histologically tied जो mark zone होता है वहां तक जाना होता है आपको। वो आपको एक्सरे में हिस्टोलॉजी नजर नहीं आती है, but by theory it is 4 to 5 millimeters, 4 to 5 millimeters from articular surface, yeah? उसकी क्या रीजन होती है कि 4 to 5 millimeter articular surface तक जाना पड़ता है? एक तो आपने बताया कि टाइट मार्क होता है ना, दूसरा क्या होता है इसका? Sir, if we are putting a cement, so it would not go into the joint. Okay, so I would not recommend you put cement anyway, because what Sir, cement will do? Okay. Because the cartilage is intact, sir. So you don't want an arthrogram. That's what you're telling me, isn't it? उसका कवर इतना होना चाहिए कि आप उसमें कोई इंजेक्ट करें वो जॉइंट में ना चला जाए, ठीक है? बट सीमेंट ना डालिएगा, क्योंकि सीमेंट से हीट जनरेट होती है, जो हीट जनरेट होती है अगर वो 4 मिलीमीटर कार्टिलेज के पास होगा ना, तो वो कार्टिलेज को खत्म कर देगा। Yes. Okay, so you can make a big hole and you can fill it with PRP, or you can make a small multiple holes and you can fill it with PRP. Okay, or you can make a big hole and put a fibula into it, free fibula as a strut graft. Okay, so this is what I do. Okay, this is what is available to me, but I'll show you various other things. So under X-ray control, we put a guide pin to where the problem is. Okay, once I put a pin in there, I put a 4 millimeter reamer into it. So that will go into it and clean it all up. Once I've cleaned it up, I have a special instrument which opens into the head. Okay, it goes in there and it opens like that into the head. Can you see this is going in the head and it opens like that? And then I put in something which is called a bone putty. This is a bone morphogenic protein with a scaffold which takes the shape of the defect. So I don't have to put the bone graft or vascularized fibula or anything like that. This is what I do. So my colleague Mr. Siddiq has done a lot more than I have, and he has very good results with them. So हम लोग core decompression करके उसके बाद bone graft से उसको scaffold बनाते हैं. A bone graft is an artificial bone graft which has got BMP in it. Okay, so this is what we are doing here. But you don't have to do that in Pakistan or various other countries. They do a fibula graft, a fibula strut graft, which is vascularized. You need 2 surgeons, a vascular surgeon and an orthopedic surgeon. You should leave enough fibula below and above to not destroy your joints. So you need to have an ankle joint and an ankle mortise. You do need to take the fibula with the periosteum and some muscle, and you need to take it with a vein and artery. Which artery and vein is this? Peroneal. Very good. So you take the fibula with its blood supply, which is there are 2 veins and 1 artery. They are peroneal vessels. Okay, this is what it looks like and when it comes out. Then you anastomose it. The vascular surgeon anastomose it for you. And to anastomose it, you do it to the lateral femoral circumflex artery and vein. So this is the peroneal vessels from the fibula, which is then anastomosed to the lateral femoral circumflex artery and vein. Okay, and this is what a biologic vascularized fibular graft looks like. Okay, like I said, you have to have 2 teams. It goes in a lateral position. You localize AVN with image. You drill it, the core, about 3 to 5 millimeters from the articular surface. You don't go complete. You clean and tidy it up, and you take some normal cancellous chips, either from the trochanter or from the ileum. Okay, once you've done it, the coring is about 2 millimeters bigger than your graft. So you need to know what the size of your fibula is, and then you core it about 2 millimeters above that so that it can easily pass. So the next thing then you do is you find the origin of the vastus lateralis and intermedius, and you release them so that the anastomosis takes the shortest track. जो आपकी blood supply lateral circumflex artery and vein की आ रही है ना, वो अगर आप इसको lateralis को and medial intermedius को निकाल देंगे तो वो direct चली जाएगी. Once you've done that, and once the anastomosis is started, and when you have heparinized it, this bit, ये जो उसका base होता है ना, इसमें से blood आना शुरू होना चाहिए. इसका मतलब है कि now you have vascularized the fibula. Okay?
उसको फिर होल्ड करते हैं K wire से, which goes from outside in. This is a K wire that holds it. This is a picture from one of the procedures that was done in a hospital. You can see that the K wire is holding it. But this K wire can be taken out or can be left in because it's all in bone. और उसके बाद जो है जब ये सब कुछ कर ले तो फिर वास्टर्स जो आपके थे लैटरलिस एंड इंटरमीडिएट्स उसको दोबारा जो है ना उसको रीअटैच करते हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर से जाएंगे तो वो वेसल्स को स्ट्रेच करता है, लेकिन अगर वो वेसल्स के ऊपर चला जाएगा तो फिर वेसल स्ट्रेच नहीं करता है. So is that understood now? Do we understand how to do a vascularized fibula graft? Yes, sir. Yes, sir. Sorry? सब पहला आपका काम ये करना है कि पहले सर्जन ने आपको पेरिनियल वेसल जो है ना दो उसकी वेन्स होती हैं, इट लुक्स लाइक दिस, एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस. उसकी दो वेन होती है, आर्टरी होती है और साथ में जो है ना मसल थोड़ा सा उसका मार्बल इफेक्ट डालना है ताकि पेरियोस्टम से ऊपर आपने उसको निकाला है. Once you have the graft, then you anastomose it to the lateral femoral circumflex artery. But when you're doing it, you need to take the vastus lateralis and intermedius off so that ये direct root में चला जाए rather than उसके ऊपर से जाए. Okay, so once you've done that, sorry? Sir, so we do the anastomosis of artery and vein as well, sir? Yes, both. So there are two veins that comes out, two perineal veins and one perineal artery. So the two veins are anastomosed to the lateral femoral circumflex vein, and the artery is then anastomosed to the lateral circumflex. So one artery and two veins. दो veins एक ही vein के साथ anastomose करते हैं, लेकिन वो जो fibula जब निकलता है ना graft से इस तरह निकलता है. It has two veins and one artery. ठीक है? Okay, sir. Yes, no. Yes, sir. ठीक है. इतना तो समझ आ गया कि एग्जामिनर को बता सकते हो कि क्या कर रहे हैं. उसको कहना है कि Yes, sir, definitely. एक पेरिनियल आर्टरी होती है, दो पेरिनियल वेन्स होती हैं, वो उसको ग्राफ्ट के साथ निकालते हैं विद अ बिट ऑफ मसल अटैच्ड टू इट, जिसको कहते हैं मार्बलिंग इफेक्ट. मार्बलिंग इफेक्ट समझ आती है? Do you know what marbling effect is? No, sir, haven't heard. Okay, जब आप कभी No, sir. जो गोश्त होता है ना जानवर का, जब आप उसको काटते हैं ना तो उसमें वो फैट और चर्बी की डिफरेंट लेयर्स बनी हुई होती हैं, तो वो मार्बल जैसे बना होता है, उसमें कुछ रेड होता है कुछ वाइट होता है. तो ये जो उसके ऊपर बोन के ऊपर जो है ना, जब थोड़ा सा जो पेरिनियल जो मसल होता है ना, वो उसकी जो अटैचमेंट फिबुला के साथ निकालोगे, cannot take the fibula out under the periosteum. The periosteum has to be attached to the fibula when you take it out. So जब उसका periosteum जो blood supply है ना वो periosteum में जाती है, वो bone में नहीं जाती है. तो जब आप उसकी periosteum छोड़ेंगे और blood supply, तो जब उसको निकालेंगे ना तो उसमें ऐसा लगेगा कि जो उसको red muscle. किसी ने ACL reconstruction देखा है? Yes, sir. We have seen. उसमें जब graft निकालते हो तो उस पर थोड़ी सी muscle भी attach होती है जिसको फिर साफ करते हो. Yes, muscle attach होती है, sir. हाँ, उसको कहते हैं marbling effect. Okay. तो जब आप फिबुला को निकालोगे ना तो उस पे वो मसल ऐसी अटैच होती है जैसे टेंडन में ACL में निकालते हैं ना अटैच होती है, इसको कहते हैं मार्बलिंग इफेक्ट. और उसका मतलब ये है कि आपकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो इसके थ्रू और पेरियोस्टम के थ्रू जाके बोन को सप्लाई करिए. अगर आप इसको बिल्कुल साफ कर देंगे ना तो ये वेसल फिर किसी चीज को सप्लाई नहीं करेगी, फिर ये एवास्कुलर हो जाएगी. To leave the blood supply for the bone, you have to leave some periosteum and marbling effect on it. Okay, so when you take this out, then what you do is उसको जो है आप कोर करें और उसका साइज जो है अपनी ग्राफ्ट से 2 मिलीमीटर से बड़ा होना चाहिए ताकि वो ग्राफ्ट इजीली अंदर चला जाए. ग्राफ्ट को K वायर से होल्ड करना होता है. नॉर्मली आप उसको ऐसा K वायर डालें कि आप उसको निकाल सकते हैं, और अगर ना निकालना ना तो उसको बोन में बैरी करते हैं. एक्सरे में जिस वक्त डाल रहे होते हैं तो उसकी रीजन ये होती है कि फिबुला को वहीं फंसा देते हैं, doesn't fall back, it doesn't come out anymore. ठीक है. और जो पेरिनियल आर्टरी एंड वेन है वो लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी एंड वेन के साथ अनास्टेमोस करते हैं, और उस अनास्टेमोस को छुपाने के लिए या शॉर्टकट डालने के लिए ताकि वो लंबा रास्ता ना ले, वास्टस लैटरलिस एंड इंटरमीडियस को डिटैच करते हैं, इसको अनास्टेमोस करते हैं और फिर उसको वापस रीअटैच कर देते हैं. उसके बाद सबसे जो मुसीबत वाली चीज होती है, ये करने के बाद 6 हफ्ते तक वो बंदा जो है नॉन वेट बेरिंग रखना होता है, उसको क्रचेस पर डालना होता है ताकि वो जो बोल्ट सर्फेस ना कोलैप्स हो उसके अंदर. तो how do you non-weight bear a hip? Everybody's gone quiet now.
Sir, we ask the patient not to touch, not to walk on the affected foot, but can use a walker for the walking, sir. तो उसमें कितना फोर्स जाता है जब आप नॉन वेट बेयरिंग करते हैं उसको हिप को, तो क्या फोर्सेस जाती हैं हिप जॉइंट की? रिमेंबर व्हेन यू डू योर जॉइंट रिएक्शन फोर्स, अगर आप उसको नॉन वेट बेयरिंग करते हैं ना तो उसका वेट और ज्यादा रहता है हिप के, तो ही हैज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, so he walks what is called toe touch weight bearing, which is 1/3 body weight. So 30% of the body weight can be done by toe touch weight bearing. So you can always decrease the weight on the hip, but you cannot completely abolish the weight on the hip. Okay, sir. Okay, अब सतीश, can you repeat this for me because I want you guys to understand this. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वहाँ पे फिबुला बोन ग्राफ्ट कोई नहीं बता सकता कि कैसे करते हैं. So can you repeat it? We take a middle third of fibula, leaving proximal third and distal third for the stability of ankle and knee joint. When we remove the fibula, we take the periosteum along with a layer of muscle over it, so that we can preserve the blood supply. Very good. We take one peroneal artery and two peroneal veins along with the graft. So branches of the peroneal artery. So you can't take the peroneal artery, but you will take the branches of the peroneal artery and vein that comes and supplies the fibula. Yeah. Oh, okay. Branches of the peroneal artery. Yeah. Then we insert the fibular graft into the femoral head and neck, and After we do the after we have reamed it, decompressed. After we have reamed it 1 to 2 mm larger than that fibular graft size. Okay, and you know where you want to put this graft by looking at an X-ray where the collapse is. Yes. After that, we'll do the anastomosis of the vessels with the branches of lateral femoral circumflex artery. Yeah. Wait, Satish. Your reaming should be within 4 millimeters, 4 to 5 millimeters of your articular surface. You don't want to. You don't want to do an arthrogram. You don't want to make it patent and complete. So once you've done that, then you put the fibula in there with the vessel coming out of it. And once the vessel is out of it, you will then detach the laterales and intermedius. Yeah. And you anastomose them, heparinize them. Before you close it, you want to make sure there's blood coming out of the base of the stump. There should be blood coming out of it. So that you know that you've vascularized it. You hold it with a K-wire and you reattach the vasti. Yeah. Right, sir. Right. Or you partly weight bear them, toe touch weight bearing for 6 weeks afterwards. Right. That's clear, sir. So Najam Saab, can you repeat it now? I think Najam Saab has just joined, so anybody else can repeat? Yeah, because I want you to repeat. This is the bit that everybody fails in the exam and find it difficult. You need to know how to do a fibular vascular graft. I can repeat, sir. Okay, Kiran, you go first. Okay. Thank you, sir. Sir, first we take the fibular graft between middle it is middle 1/3. We will take the fibular graft, and the fibular graft should be composed of some periosteum, as well as two vessels and one artery, possibly the branch of peroneal artery and veins. Then we took that, and we have more. Sir, we already decompressed the femoral neck and head where we are having a defect. So we over-remove 1 to 2 millimeter more than the fibular graft size, and then we put it. Then we detach some opening, some origin of the vastus medialis and lateralis, so we could have a direct course of the lateral circumflex femoral artery. Vastus intermedialis and yes, vastus intermedialis and lateralis. We have a straight course of the vessel. So after anastomosis, we need an vascular surgeon who do anastomosis for us, and then we check the vascularity, because blood is coming out from the edge of the fibular graft that is coming out of the femur from the femur, and so. So we just reamed up to 3 to 4 millimeter apart from the chondrule, from the end of the femur. We have to left that 2 to 4 millimeters, and then we reattach the vastus medialis and intermedius, vastus lateralis and intermedius, and we'll go on, and we fix that fibula from the K-wire. Yeah, and you. It's up to us. For 6 weeks, okay. So in the UK we have a two-surgeon procedure. The vascular surgeon takes the graft and anastomoses it,
The orthopedic surgeon does everything else. So it's a 2-surgeon procedure for us. I'm not sure what you do in Pakistan. So do they have 2 people or 1 person doing it? Yes, sir. Always 2 people, sir. We don't know Fantastic. to. So during an exam, you can say that the orthopedic surgeon will decompress it under vision and make sure it's 4 to 5 millimeters from the articular joint while the vascular surgeon is taking the graft and preparing the graft. Yeah. Once the graft is done, you will measure it. Make sure that you make a hole 2 millimeters at least bigger so the fibula can pass easily. You then detach the intermediate with the vasti so that you have a direct route rather than going through something or above it or whatever. Once you've anastomosed it with the vascular surgeon and you make sure that it's latent, there is blood coming from the base of the fibula, you know that it's vascularized, then you use a K-wire to hold it. You check it with the image to make sure everything is okay, and then you reattach the vasti and ask the person to weight bear partially for the next 6 weeks. इस पे आप कोई घबराहट कोई confusion नहीं होगी एग्जाम वाले दिन, ठीक है? No, sir. It is very much clear. Fantastic. Yes, sir. Inshallah. नहीं एग्जाम सबने पास करना है क्योंकि बहुत महंगा होता है एग्जाम फेल करना है यार, बहुत महंगा होता है, हर एक के पास इतने पैसे भी नहीं होते, बड़ी मुश्किल से जमा करके लोग इम्तिहान देते हैं. So that is one option. You can do a fibula strut graft. Okay. So the other option is on a Smith-Peterson approach, you can make a trapdoor and you can find where the dead tissue is, take it out and put bone graft in it. Not done anymore commonly purely because it has got a high comorbidity and there's a lot of work you need to do. Okay. So, but it's an option. You can do a trapdoor procedure. Or So the head has to be dislocated for this, right? not for the trapdoor procedure, no. Okay, sir. But for this procedure, which is another trap, so this is in the neck. Okay. Yes, sir. But if you're doing it for the head, where you want to know where the problem is under X-ray, then yes, for this you have to dislocate the hip. Okay. Again, this is not done anymore because of the damage you cause to the cartilage. The dislocation causes the problem with the blood supply and it's got an increased comorbidity. But I've just mentioned this for completeness rather than anything else. But if somebody asks you, there are 2 types of trapdoors. You can do it through the neck or you can do it through the articular surface. Okay. Excuse me, sir. Any other choice you have besides this? If you're not competent, you don't have a vascular surgeon, what other way can you give blood supply to the head? Yes, sir. We have option of another vascular flap that is known as Myers flap. Good. Yeah, I'm listening. In the Myers flap, we take a piece of greater trochanter along with attachment of quadratus femoris. Okay. We make a window through the femoral neck and pass that graft into the femoral neck and head, sir. Good. So the easiest and the one with the less comorbidity is to take the iliac crest with the tensor fascial lighter. Okay. Yeah. But you can do what you just said, the quadratus femoris graft. Like, okay. So that has got more comorbidities and it weakens the neck or tuberosity of the femur and can have fractures. So the easiest one is to do this. However, what you said is totally right. Like, okay, so you can actually give blood supply to these. This is normally done for people with neck or femur non-unions. Okay, but you can use it here also. Okay, so there is now the next topic is realignment osteotomy. Okay, sir. So in a realignment osteotomy, what you do is you relocate the necrotic area from the weight-bearing area. Yes. Okay, and there are 2 ways of doing it. You can do varus valgus, or you can You can do it like an angular rotation, or you can do a rotational. So there are 2 types: angular osteotomies and rotational osteotomies. Do you know the difference? No, sir. So realignment varus and valgus में जब करोगे तो उसको angular osteotomy करेंगे, ठीक है? और अगर उसको head को घुमा रोटेट करना होगा, जैसे for example circularly rotate करेंगे तो उसको rotational osteotomy करेंगे. I'll show it to you and you understand, okay? So but sir, excuse me, sir, doesn't this need the prerequisite for this procedure is that the head should be involved less than some percentage, I think 30%. Yes. If a small area of head is involved, then we can do this, huh? Yeah, absolutely correct. The ARCO 3 and 4 is further divided into 15%, more than 15%, but less than 30%, and more than 30%. So there are 3 gradings to the ARCO 3 and 4. It depends on the area of weight bearing. So if it is less than 15%, then you can do a realignment osteotomy. If it is more than 15%, less than 30%, you can do a rotational osteotomy. If it is more than 30%, then you have to do a replacement. Yes, sir. Okay. So this is called a angular osteotomy, where
if the weight bearing area has got a problem, you osteomize it and go make it into valgus. So the weight bearing area is now changed. But like we said, it has to be less than 15% of involvement. So अगर आपका जो weight bearing area इधर जो है ना आपको AVN था, आपने valgus से उसको weight bearing से बाहर निकाल दिया है, ठीक है? Do you understand? यहाँ पे था आपको problem, आपने valgus करके बाहर निकाल दिया। और अगर आपको problem यहाँ पे था, तो आप उसको varus करके बाहर निकाल देंगे, like for example, like this. Okay, so you can do a varus osteotomy. They're both called Powell's, but it's called Powell's, varus and valgus osteotomy. So valgus osteotomy की एक indication होती है, अगर contraindication होती है, अगर आपकी flexion जो है ना 60 degrees से less है hip के बल, तो you cannot do a valgus osteotomy. Okay. You must remember this. Otherwise, it will stop your hip from working. और relative contraindication है कि जिसको knock knees होती है ना, उसको भी नहीं करना है क्योंकि फिर उसकी knock knees deformity पड़ जाती है. बट अगर आपका हिप का पेन है तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री फ्लेक्शन से कम होना तो नहीं कर सकते हैं वाल्गस ऑस्टियोटमी. और ये वेरस ऑस्टियोटमी की, उसमें वेरस ऑस्टियोटमी में जो है ना नेक शाफ्ट एंगल आप उसको कम कर देते हैं 135 से. इसका प्रॉब्लम क्या होगा सर? अब डक्टर्स वीक हो जाएंगे? नहीं, जो आपने टेंशन फोर्सेस सर पेशेंट करना था के लिए एबिडक्टल कर रहे हैं, तो वो हीलिंग उसकी जो है प्रॉब्लमैटिक होती है. तो देयरफॉर यू हैव टू हैव अ गुड फिक्स एंड यू हैव टू हैव बोन ग्राफ्ट. Okay. Kindly repeat the last point, sir, if you don't mind. So you remember when you have a neck of femur fractures, to make it work, you want to convert tension into compression. Yes. So to convert tension into compression, you do a valgus plate. So from a 135 plate, आप 155 plate डालते हैं उसके अंदर. Yes, sir. Forces जो होती है ना, वो tension को compression में convert कर देती है. लेकिन अगर आप compression को tension में convert करेंगे, आई उसको varus में डालेंगे ना, तो फिर वो compression नहीं होती है, तो फिर उसकी healing नहीं होती है, तो उसको augment करते हैं healing को, either putting bone graft in it or a longer plate. Okay, sir. So shear will be increased, sir. Tension, yes, shear. Less than 15% articular cartilage हमारा involved है, तो हम rotational कर रहे हैं. More than 15. और less than 15 पे realignment. जो angular osteotomy होती है ना, वो less than 15%. For more than 15%, but has to be less than 30%, उसमें rotational osteotomy करते हैं. I will show it to you in a minute now. So we are doing angular osteotomies at the moment, which means that the defect is, or the forces is causing only 15% of a problem. Okay. अब इसको कहते हैं rotational osteotomy. इसमें tuberosity जो है ना, trochanter को निकाल देते हैं. ट्रोकेंटर को निकालने के बाद उसमें एल शेप ऑस्टियोटमी करके उसको रोटेट करते हैं. तो ये आपका जो डिफेक्ट था ना, जो वेट बेरिंग था, उसको आपने घुमा के इस तरफ ले आए. कैन यू सी दैट? Yes. This has come here. You can see from the blood vessel. The blood vessel was here. By rotating it, the blood vessel has now gone behind. So this is osteotomy. This can be done for people who have more than 15% but less than 30%. Okay? Yes, sir. It is clear now. 80 degrees. Sorry? Sir, how much rotation can we do? So you can do as much rotation as the vessel will allow you. This depends on the vessel. अगर आपने इतनी rotation कर दी है कि vessel stretch हो गई, वो tear हो रही है, तो फिर then you can do it within your limits of your vessel. So dislocation करके करना होगा ना sir? After dislocation ही होगा ये तो? Yeah, we don't need to do. Yes. You don't need to dislocate it, but you can do it inside too. Purely because आप उसने traction में रख के जब ये osteotomy करेंगे ना, तो वो जो traction की boot होती है, उसको जब rotate करोगे तो ये rotate हो जाएगा. So this is still in the joint, this bit. Okay? और ये joint से बाहर होता है, जैसे DHS करते हैं ना, उसी तरह boot को डाल के trochanter उसका आपने निकाला, फिर उसका एक अंदर lesser trochanter तक osteotomy की, और lesser trochanter से ऊपर जाके इसको डिटैच कर दिया आपने. जब आपने इसको डिटैच किया तो ये जॉइंट में है, ये जॉइंट से बाहर है. जब आप बूट को रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा. And you can do it within the level of your blood vessels. I am not sure if you can do it outside the joint. I have no experience with that, but I think it is done with a DHS table. Okay, sir. Okay, so that is if you have more than 15 but less than 30. ये आपका जो weight bearing area है, उसको आपने रोटेट करके non weight bearing area में कंफर्म कर दिया है. जो आपका relatively normal joint था, उसको आपने ऊपर की तरफ ला दिया weight bearing के लिए. That is what rotation is. So it's easy for exam purposes. You have two osteotomies.
They are called realignment osteotomy. One is angular and one is rotational. The angular one is done if it's less than 15% and you want to change the weight bearing surface. So to change the weight bearing surface, you can either bring it out of joint or push it more into the joint. So valgus or varus कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है? उसके बाद जो है उसमें एक याद रखना कि जो valgus osteotomy उसकी contraindication है 60 डिग्री से लेस आपको hip flexion हो. उसके बाद अगर उसकी जो है ना 15 डिग्री से ज्यादा है और 30 से कम है तो उसको फिर रोटेशनल ऑस्टियोटमी करते हैं. और ये तो फिर सबको आसान पता है कि 4 या 5 के बाद जब आर्थराइटिस शुरू हो जाता है तो उसमें जो है ना आप टोटल हिप कर देते हैं. ओके सर. हेमी में जो है ना ऑप्शन है क्योंकि सिर्फ हेड होता है, एस्टेब्लिशमेंट का नॉर्मली नॉर्मल होता है, यू कैन पुट अ हेमी देयर इफ यू वांट टू, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ हेमी एंड बाइपोलर आर नॉट सो गुड. ओके, जो हिप रिप्लेसमेंट बर्मिंघम वाले जो है ना वो रीसर्फेसिंग कर रहे हैं विदाउट द एस्टेबुलर कंपोनेंट, just the head को replace करते हैं younger people में. However, in the shoulder, the evidence is that if you do a hemi and not a total, then they have long-term failures because of the cuff. But the hip is not the shoulder, or the shoulder is not the hip, so therefore there is no cuff involved here. So maybe doing a hemi as a bipolar, as a resurfacing may work in this long term. Even in the case of AVN. This is only for AVN, not for arthritis from other reason. But so this will also be valid for 3 and 4 arco, na? If the acetabulum is once involved, like. Sometimes the acetabulum is normal. So the arthroplasty is done in 4 only, arco 4 only, okay, and 4 and above. Sorry. So, but they have a high failure rate than osteoarthritis. They have to have a revision in the future. And the main indication for doing is pain. Okay, sir. So I don't do hip replacement, but this is the post-op X-ray from a total hip replacement. If I was doing a morning ward round and I see this X-ray, what would be my concerns? Sir, screws are a little bit larger. So there are अगर मैं सुबह वॉर्ड राउंड में देखा तो जब तक जो है ठीक नहीं होगा मुझे तो नींद नहीं आएगी यार कि कौन सा वेसल ये फाड़ दिया है. So concerns of penetration into exactly, yeah, it is urinary bladder other structure. It's worrying. Okay, so I think that's the end of AVN. I hope you have learned something. Okay, is there any questions? Yes, sir. One question, sir. Here. Yeah. Sir, use of steroids and alcohol are one of the common causes of AVN in our country, sir. Can you tell us the exact pathogenesis by which these cause the AVN, sir? I didn't hear your question fully. What is the common cause of AVN in Pakistan? So common cause is the use of drugs, steroids, and use of alcohol, sir. Okay. I want to. So the pathogenesis is exactly the same as we described. For some reason, the blood supply is not clear. Okay. So when you taking steroids, the exact. It causes fatty infiltration. Alcohol causes 3 things. It causes increased coagulopathy. It causes fatty infiltration into bone, and it causes sluggishness of the venous return. These are the 3 things that the alcohol causes. Because of sluggishness, increase in coagulopathy and fatty infiltration in the bone marrow, these all 3 predisposes to less blood supply to the head of the femur. Because of less blood supply, in return, it causes venous hypertension. Venous hypertension then causes the microvasculature to stop giving blood supply, and because of that, it goes into the vicious circle. So the circle is the same, whatever you want to add on to it. So 3 things happen in alcohol: increased coagulopathy, fat deposition, and sluggishness of the venous flow. That's alcohol. What was the second thing you said? A steroid. Hello? Yes, sir. Steroids. So again, steroid causes increased coagulopathy and sluggishness, and because of that, it actually causes low blood supply to go to the head of the femur, and because it is causing low blood supply, it then goes back into a vicious cycle. Let's go back to this thing again, actually. And the steroids and alcohol also causes primary cell death. That's another reason.
you know, the bone in the head of the femur actually dies primarily anyway because of steroids and alcohol. Okay, sir, I got it. So you have problem with increased hypercoagulable states, you have venous stasis, and you have fatty infiltration into the bone marrow. So we know if you have more fat infiltration in the bone marrow, they've got a high predisposition of having AVN. Okay, sir. So smoking, what about smoking and non-union association? If you could repeat it, sir, if you don't mind. So smoking, no direct association for AVN, right? ये इस तरह है कि आप एक स्टडी करें कि जो शख्स घर पे टीवी देखता है उसको कैंसर होता है, ठीक है? So everybody watches TV. So everybody that has cancer will be watching TV. So then you can say that there is an association for watching TV and cancer, but that's not true. So smoking जो है वो common है. There's a lot of people who smoke and they also have AVN. So the thing that can indirectly cause AVN is again hypercoagulopathy and causing venous stasis. These are the two things that smoking does. So if your blood supply for some reason is slow or sluggish to the head of the femur, then you will have AVN. But I have not read it, or maybe I have forgotten it, that smoking actually directly causes AVN. I don't know. Does anybody know? Does smoking cause AVN? A concentration of oxygen in the blood leading to the necrosis, ischemia of the bones. So there is written that smoking causes AVN. So, but it retards bone healing and it is a factor in non-union. So you have to have some reason to have AVN before it doesn't heal anymore, like I say. Okay, sir. Yeah, I don't think so. Let me look here. Okay, so AVN, it says that it's got a risk factor with smoking, but it does not actually causes AVN. Bone necrosis. Fine, sir. And it causes osteopenia, and the bones are weaker. Therefore, if you have to have any other reason to have, then you may have. Sir, this lecture of yours will be on YouTube, inshallah. Inshallah, yeah. I think. Okay, sir. Thank you, because some of our fellows are not here, and they want to be a part of it. So thank you, sir. Yeah, I know, but I mean, this is very insulting for me. Is I do a lecture to two people, then everybody sees it in their own spare time, like, isn't it? So if I can make time, you guys should make time too, isn't it? So okay. So next, now, when do you want to do MRI scans? I have a very good lecture on MRI scans for shoulders and knee, and I can maybe add a couple of slides on spine also on it. But when do you want it? Sir, tomorrow is a holiday, so tomorrow will be like okay, because it's a holiday at 23rd of March. So anytime tomorrow that you are free. We can have it tonight, sir, at 8 or 9. So I am coming back from the appraisal at 5 o'clock. So 5 o'clock is 10 o'clock Pakistan time. Okay. Is that okay? 10 o'clock? I am free tomorrow morning and this time also. So we can do it tomorrow morning, or we can do tonight. What do you guys want to do? Tonight, sir. Tonight, sir. Yeah, yes, sir. We'll be ready. We can do. Okay, good. So I'll save this and I'll post it to you guys. But tonight, I will be home at 5 o'clock, I think. And we'll do it by 10 o'clock tonight. Then, yeah. Inshallah. I will be waiting and sir, kindly update on the WhatsApp channel, sir. लुकमा चाहिए, हर चीज को खाना खिलाना भी तुमको मुंह में देना पड़ेगा, ध्यान भी तुम लोग दे रहे हो, तैयारी मैं कर रहा हूं. पाकिस्तानी है सर, आपको पता है. Okay, I'll see you guys tonight. Okay, thank you, sir. Thank you very much.